Good morning, students. Here is the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. This is part 1 of this video. Now, first thing is the work function. It is the minimum amount of energy required by the electron to just escape out from the metal surface. तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं. Work function of depend on the nature of the surface of the metal and condition of its surface. Now here is the one unit, that is the electron volt. So any energy acquired by the electron, that we calculate in the electron volt. It is the kinetic energy gained by the electron when it is accelerated by the potential difference of 1 volt. So you can calculate by this, energy is equal to charge into potential difference. So 1 electron volt is 1 coulomb into 1 volt. So 1 coulomb charge is this one, 1 volt. So after solving you will get 1.6 in 10 to the power minus 19 coulomb joule. So 1 electron volt is 1.6 in 10 to the power minus 19 joule. Now here is the electron emission. So whenever the electron emitted by the surface of metal, this is called as electron emission. So there are so many types of the electron emissions. Now one is the thermionic emission. This is the emission caused by the thermal effect, that is because of heat. Whenever that any surface is exposed to the some heat radiation, so electron also emitted from that surface. Now another is the field emission of the electron by the very high electric field of order this much. So when any metal is subjected to this much electric field, so electron emissions from the surface takes place. Now third one is the photoelectric emission, the emission of electron by the electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation, whenever some electromagnetic radiation falls on the metal surface, so electrons also emitted. Now here is the secondary emission. So this is the one type of the emission of the electron by the fast moving electron. When the fast moving electron hit any metal surface, so that can eject the electron from the metal surface. This is called as secondary emission. Now come to the photoelectric effect. ये क्या होता है? phenomena of the emission of electron from the metal surface when electromagnetic radiation of the sufficiently high frequency are incident on it. It is called as photoelectric effect. It was observed by the Hertz and the Lenards. तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का निकलना जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसको कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ हियर इज सम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये कोई इवेकेटेड gas tube hai, and this is the quartz window, we can say quartz window, and this is the cathode made up of photosensitive material. This is anode, it is connected by this micro emitter. So here is the high tension, this is the high tension battery HTB, this is the potential divider. So what happens, so whenever the light falls on it, so electrons are emitted from the surface of this cathode, and these electrons will go towards the anode because the anode is kept at the positive potential as compared of this cathode. Okay, so photoelectric current is generated here. Okay, so whenever the anode potential is changes, the more and more electron from cathode to anode reach to the anode, and photoelectric current also increases in that case. ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की ओर, दीज कंस्टिट्यूट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. सो दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस बात पे डिपेंड करेगी ये देखना है. तो सबसे पहले है कि इस पे इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट इस पे पड़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट है. तो नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज द प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इट मीन्स the photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiation. तो इन दोनों में ग्राफ होता है, तो एक लीनियर कर्व होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं फोटो करंट भी बढ़ जाती है, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल दैट ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेज, एंड दैट्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज. ओके, now here is the another effect of the potential. On increasing the potential difference between the cathode and anode, photoelectric current increases up to the certain value that is called as saturation current. अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
जैसे आप देख रहे हैं ये ग्राफ देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल and retarding potential. Retarding potential when you we will anode becomes the less anode will become less positive as compared of the cathode. So that is called a retarding potential. ये हम जब potential को reverse direction में बढ़ाएंगे तो that is called a retarding potential. Okay. So what happens? So when to at a particular potential that is called V naught of the anode. So this photoelectric current goes on decreasing, ultimately comes to the zero at this value V naught. इस वैल्यू को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो एंड इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. तो एनोड का वो पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल. होता क्या है जनरली whenever the light falls on the cathode, so photo electrons emitted from the cathode and they reach to the anode. Some electron already reach to the anode, so it means photoelectric current starts as the incident radiation falls on the cathode. But what happens? So if we want to stop those electrons, so we have to apply the retarding potential on the anode, and retarding potential at a particular value of the retarding potential, no electron reaches to the anode. So at that point the photoelectric current stops. So that potential of the anode at which the photoelectric current stops, that is called as this cutoff potential. अब जैसे आप देख रहे हैं ये तीन कर्व है, तो ये तीन कर्व ये है कि यहाँ पर ये I1 इंटेंसिटी के लिए. जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और बढ़ जाती है एंड फाइनली इट रीच टू द सैचुरेशन वैल्यू. एंड थर्ड वन फोटोइलेक्ट्रिक करंट और बढ़ेगी, I3 इज मोर ग्रेटर देन I2 इज मोर ग्रेटर देन I1. तो इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज होगी बट देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम. तो व्हाई इज इट सो? इट इज सो दैट बिकॉज वेन एवर द लाइट of more and more intensity falls on the cathode, so that does not increases the kinetic energy of the electron but only increases the number of electrons. That's why photoelectric current is increased but the stopping potential does not increases in that case. Okay, तो यहाँ पर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है एंड इट शुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज E into V naught. So maximum kinetic energy इलेक्ट्रॉन की EV naught, दिस इज द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या काम करेगा कि उसको रोकेगा इलेक्ट्रॉन को. और कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकेगा? जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपका एनोड तक पहुंच सकता है, तो उसी को रोकना है, तो उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा. तो E into V naught is that work done. Okay, तो half mv maximum square equal to EV naught. This is the maximum kinetic energy of electron. Okay, now come to the effect of the frequency. What happens when the frequency of the incident radiation is increased? So what happens in that case? So when the frequency is increased, so this is the curve. This is for one frequency nu1, this is another frequency nu2, this is for third frequency nu3. So what happens in that case? Here are the three values of the stopping potential for the three frequencies of the incident radiation. So why is it so? Why current is same here? Finally current is same here. Current is same here because whenever the intensity of the incident radiation is increased, so number of electron does not increases but energy of the electron increases, and when the energy of increases, so stopping potential will also be increased. So फिर nu3 greater than nu2 greater than nu1, तो nu3 के लिए stopping potential सबसे ज़्यादा होगा, nu2 frequency के लिए उससे कम होगा, nu1 के लिए और कम होगा. But as number of photo electron does not depend, number of photo electron emitted from the surface of the cathode does not depend on the frequency of incident radiation but depends only the intensity. So if we keep the intensity constant and change the frequency of incident radiation, so energy of the electron increases, so we have to work more, or the stopping potential has to work more. So that's why stopping potential is increases in that case. V01, 02, 03. Yeah, V01, V02, V03. Now here this is the stopping potential versus the frequency of incident radiation. As we know that as frequency increases, the stopping potential is also increased. So तो उसमें linear curve होता है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि stopping potential
और वर्सेस, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब at a particular frequency only photoelectric emission takes place, and that particular frequency either this one for metal A or and this one for some another metal. So this is, these two frequencies are called as threshold frequency. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर। सो जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के, नंबर 2 फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंस रेडिएशन शुड ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यू नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर उससे कम होगी तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। थैंक यू, एंड वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द पार्ट 2।